हे गाइस वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है बजाज पल्सर N125 रिव्यू। हाँ, आज का जो टॉपिक है ना वो मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि आई लव बाइक राइडिंग और 1 टू 5 मेरी टॉप फेवरेट में आती है। अच्छा ऐसे है कि रिएक्शन रिदम के ऊपर हमने ऑलरेडी बजाज की केस हिस्ट्री के ऊपर तो एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो देखी भी और अपना रिएक्शन आपके साथ शेयर बहुत किया है। इंटरेस्टिंग थी। और मैं ये कहूँगा कि बजाज की जो एक केस स्टडी थी, हमारे लिए बजाज की जर्नी बेसिकली बहुत इंस्पायरिंग थी और हमें बड़ा मज़ा आया था उस वीडियो को देख के और बड़ा कुछ हमने गैदर किया। शायद उससे पहले भी हम बजाज के बारे में कुछ बिट्स एंड पीसेस में ज़रूर जानते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि जिससे हम एक पूरी पिक्चर ड्रॉ कर सकते। सो वी नो कि बजाज की जो ये 125 सीरीज़ है, ये सिर्फ़ कोई एक बाइक नहीं है, ये इस सीरीज़ के अंदर कई कैटेगरीज़ में बाइक्स आती हैं। सो ये N25 क्या है, ये कैसे होने वाली है? अब आई डोंट नो कि ज़ैद को पता है इस चीज़ के बारे में कि नहीं पता, लेकिन अच्छा चलो चलते हैं, देखते हैं इसको और उसके बाद अपनी जो एक थॉट्स हैं, वो आपके साथ हम शेयर भी करेंगे। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप देख रहे हैं रिएक्शन रहता। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। Autocar। नाइस। ब्यूटीफुल। तो बड़ी मॉडर्न बाइक है। अच्छा, मुझे पहली शक्ल में ना ये वो सुजुकी लगी है ज़ैद। लगती है ना? लगती है। In the past 5-7 years, the 125cc segment, particularly the premium 125cc segment in India, has really taken off. And you can understand that because things like GST, BS6, ABS, CBS, all these norms came in and made bikes really expensive, which increased the appeal of 125s. Now, Bajaj already has the classic Pulsar 125, which is a huge success for the company. Pulsar 125 यार, इसको भी देखो। 60,000 units a इसके month. Pulsar में तो And they काफी also सारे have the variants आते हैं। NS 125, ये भी है। which doesn't sell as much. This is Bajaj's third 125. It's the Pulsar N125 and its role is to Third take on the 125, TVS Raider and the Hero Extreme 125 because those two bikes alone have created a sort of new premium, youthful, sporty 125 segment and they account for at least 60,000 units a month. 60,000 together. units per month, wow. Now Bajaj has started from scratch with this motorcycle. It is not based on any of the other N platform bikes. It has a new chassis, a new engine and a completely new look. Let's start with that because the Extreme and the Raider sell so well because of the way they look. Bajaj had to take them on and they've come up with something really quite unique. It is a funky, polarizing design and it's like nothing else out there. There's lots of floating panels all around, like out here. This panel particularly is really interesting. You usually see a panel along the back which makes the back of the bike look big. On this motorcycle, it's here in the center where the back is quite slim. Another fun thing I noticed is this, and there's an interesting story here as well. Now it looks like aero, and aero on a 125cc bike is completely pointless, but here it actually has a function. The original design was closed off, but the engine developers went to the stylists and said, hey, we need air to cool the engine. So they opened this up and that's actually functional aero on a 125. Now this is a small motorcycle and Bajaj has created this new platform to make it as light as possible, which we'll get back to in a bit. But one of the things that comes with that is a really slim front fork. It's just a 30 mm diameter telescopic fork. So to get around that, they've put these large chunky shrouds around it. I think it's a bit too much, but it does give the bike much more purpose and presence at the front. Finally, you've got these trademark Pulsar swooping lines out here, these tank panels. The tank itself is not as long as you would see in other Pulsars, but this looks familiar. The tail section also has the typical Pulsar उनका twin फंक्शन भी straight बड़ा tail अच्छा, lamp, वो but एरोडायनामिक्स it's a भी बड़ा nice अच्छी funky तरीके से modern उन्होंने looking इन्वॉल्व unit. किया है इसमें। Switch gear is also new. It comes off the N family. It looks quite nice, but you have basic halogen lighting up front. There's also a US Wow. here. In general, this is a stylish, funky and unique looking bike and it also comes in some very youthful colors. Colours Now, भी सारे बड़े part खूबसूरत of a new लगे। platform is what that means for the seat. So we're going to call Ashley in here to show you what this looks like. Ashley is 5'6" tall. This has a 795 mm seat height. Ashley, all yours. Okay, so both his toes are on the ground and Ashley tells me this feels kind of like his 125cc bike at home. No surprises there.
5'6" So while के the लिए तो seating खैर position works मतलब उसके for लिए भी someone of कंफर्टेबल है. average height, it's also not bad for a tall rider as well. I find that this Like ये जरा ज़्यादा easy. the foot peg to seat ratio is not cramped. It's a little sporty, it's a little high up, and there are benefits to its height, which we'll come to soon. But in general, this is a अच्छा, nice, 6'1" भी बड़ी comfortable अच्छी riding height होती है. position. बड़ा सही आ What I रहा don't है। like is the handlebar. This feels very much like a commuter handlebar in the way that it looks. It's not wide enough. I think a slightly more sporty handlebar would have really gone with the vibe of this bike. But in general, it's quite comfortable, and the pillion seat seems to be spacious as well. खूबसूरत है. Telescopic foot. राइड भी नजर आ रही है, इससे भी अंदाजा हो जाता है। अच्छा, मुझे लगता है राइडर का Now let's पोस्चर talk बिल्कुल about the कंफर्टेबल लग रहा other है. new element of this motorcycle, that engine. This is an all-new engine. Bajaj tells us it has almost nothing to do with the older Pulsar 125cc motors. But despite the fact that it's new, it still has a kickstarter because that's an important feature for customers in this segment. Now, power and torque figures are up there with the best in the segment. It's about 12 horsepower, 11 Newton meters of torque. But the big thing here is that the power to weight ratio is the best in the segment, and that's because this 5-speed bike bike है, ठीक है, weighs बेहतरीन. quite little. It's only 125 kilos, and in fact that was one of the definitions of this project. Bajaj wanted to make a new 125cc bike that weighed 125 kilos. So the power to torque ratio is good. It's got a 5-speed gearbox. Another thing Bajaj is quite proud of is that the clutch is super light. They say 50% less effort required than the competition, and yeah, it's really one finger effort. That's also quite nice to use. To show you what this engine sounds like, as you noticed, it's got a silent start that's only in the top model. अच्छा, स्टार्ट की तो हार्डली आवाज है, साइलेंट है. Like with all the new N engines from the N Pulsars, this is really smooth. It has a nice deep note. It's a very nice engine. Refinement is excellent. You'll only feel very mild vibrations in the bars and the foot pegs at very high RPMs. In general, it's a super smooth engine. In fact, I noticed something unusual with this engine, which is something I don't think I've seen with any other bike before this. And that's when you're riding in traffic and you come to a jam and you slow down. It's so smooth that the engine doesn't tell you that it's about to stall. So there were a couple of times where it took me by surprise. The engine was just off. I didn't realize it had stalled. I didn't realize it was about to stall. स्मूथ है कि इंजन स्टॉल हो गया, Part पता of भी नहीं that चलता कि problem इंजन is स्टार्ट है that या स्टॉल है. this instrument console does not have a rev counter. It does not have a gear position indicator either. We have spent just a few hours with the bike today. Maybe as you spend more time with it, you'll get used to that. But the fact is, it's a really smooth engine. It's also tractable, so you will be in third gear, 20 kilometers an hour. It doesn't complain. But when you get into those situations, you have to be aware that the engine may just stall on you, and it's not going to give you much of a warning. 6'1" height के लिए As for थोड़ा सा actual leg performance, cushion like I said, the motor is nicely tractable. That's a good thing in a commuter motorcycle. कह भी Tuning सकती is है. very smooth. It feels natural. Performance seems to be about on par with the Raider and the Extreme. Top speed should be about 100 kilometers an hour. It gets to about 80-85 peacefully, and then it's a slow climb above that. I did notice that the meat of the performance comes at the higher parts of the rev range. So if you want to go fast, you do have to rev it out. And as the revs build, you'll feel it start to pick up pace. In general, I think the performance levels are good for a motorcycle like this. The really nice part about this bike though is its dynamics. Now, like I said, it's just 125 kilos. Only the TVS Raider is lighter by 1 or 2 kilos, but this is a very nimble motorcycle, very agile. We've been riding it around on a go-kart track. That's what we got to do first today, and good fun. I mean, it's not a sporty motorcycle particularly, and I'll get to why in a bit, but it's a very light and easy and agile handler, and for life in the city, that is excellent. Not at all overreactive. It doesn't do anything strange. It doesn't lean over too quickly. It just feels easy. That is nice. It's also running on some nice MRF tires on this surface. It was perfectly good. No complaints there. What I will complain about slightly is that the disc brake needs a little too much effort, and that takes away from some of the sporty character of this motorcycle for me. That and the narrow handlebar. So while the bike does seem to have an element of sportiness to it, it still feels slightly more focused towards the comfort side of this segment. Now, while light and agile handling is great to have, what's even more relevant is that the suspension setup on this bike is really good. There's 125 mm of travel at both ends, but the more relevant thing is that it soaks up bad roads and bumps really well. For a 125cc bike, the suspension is very good, and I have no complaints in that regard.
व्हील बेस भी Now, काफी Bajaj अच्छा has है launched इसका, the उसको N125 in दिक्कत two नहीं होती बाइक versions. को। The nice thing is that both versions get a disc brake as standard. The differences between the two, they're not that big. You get unique color schemes, you get the ISG which gives you that quiet start and the start-stop system. You also get a slightly wider tire on the top version, and there is Bluetooth compatibility on this model. The final thing is that this top version gets a different LCD display. As far as features go, certain things are nice. You get full LED lighting, you get the start-stop system, quiet start. But compared to the competition, this bike does lack out in certain ways. For me, the most glaring misses are the fact that it should have had a rev counter and a gear position indicator. But beyond that, there's also no option of ABS, although Bajaj says that they will give it single channel ABS if the market demands it. Finally, I want to talk about quality and fit and finish. In many areas, the bike looks nicely put together, but certain things can improve. For example, these panels sound a little rattly, these ones don't, and there is a visible difference in the panel gap between the right side and the left side, and that's something the rider can see, at least on our bike. I also think that the plastic cladding around this fork shroud is a little rough. It could be finished a little better. In general, these are small things, but they do stand out, and I think Bajaj has some room for improvement here. Nevertheless, Bajaj has been really competitive with the price, and even the top model costs less than rupees 1 lakh ex showroom, which makes it more competitive than the Raider and puts it bang on par with the Extreme 125. Now, availability for this motorcycle will start in northern states like UP because that's the big demand for Bajaj's 125cc models, and the company says that it will scale out to the rest of the country by Jan or Feb. From what I've seen here today, this is a credible rival to the likes of the Raider and the Extreme. It will appeal to people who already like Bajaj's 125s but want something new, something fresh. This is the motorcycle for them. Is it the best bike in the class though? Well, that's not an answer I can give you today. We're going to have to ride it back to back against the TVS and the Hero, and only then can we give you our final verdict. Great bike, Very, यार। very nice. Outstanding. यार, what a wonderful bike it was. I really loved it. और We loved it. Just in case you have noticed, we are also I'm watching. sorry, हम सबको ये बाइक बहुत पसंद आई, और खास तौर पे जो उसकी एक स्पोर्टी फील थी ना, वो लिटरली दिल को लग रही थी, बहुत बिल्कुल लग पसंद रही आई। थी। मतलब लुक्स की बात करेंगे क्योंकि मैं इससे ज्यादा तो बात नहीं कर सकती, पर लुक्स वाइज बात की जाए, बहुत खूबसूरत, बहुत ज्यादा स्टाइल और लुक आ रही थी इसकी। और ये आप हाँ, उनसे सुने definitely. जो फर्स्ट टाइम बाइक की तारीफ कर रही हैं, ये हाँ, करती नहीं होती हाँ, हैं। मैं नहीं करती, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आई है। नहीं, मेरे सामने अभी भी यार उसका थंबनेल खुला हुआ है, एंड आई वुड से कि अगर लुक्स के ऊपर ही नंबर देने हैं ना तो हाँ। 10 आउट ऑफ 10 है भाई। बिल्कुल है, बिल्कुल। बिल्कुल है। हर सूरत में 10 आउट ऑफ 10 है। और उसके बाद इसको जितना एरोडायनामिक बनाया गया यार, उसकी एक वजह भी है ना। आप ये चीज देखो कि ये जो आपको एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपको बाइक के ऊपर ये उसको एरोडायनामिक बनाने के लिए मिलते हैं ना, ये बहुत जरूरी है। और बाइक को एक कंसिडरेबल वेट के अंदर रखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। बिकॉज अब तो एक सीधी सी बात है, जमाना ही उस चीज का है जो कि मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंट होगी, चाहे वो गाड़ी है तो चाहे वो बाइक है। इसलिए क्योंकि इस बाइक को देखें तो 125 के हिसाब से ये लाइट वेटेड भी है। बाकी बाइक्स अमूमन हैवी होती हैं इससे, वो क्योंकि कह हम सकते हो। कंपैरिजन करते रहते हैं ना चीजों का। इवन जो इसकी बजाज पल्सर है ना, नॉर्मल एडिशन जो कॉमन बाइक है, वो भी इससे भारी है। अच्छा, वो भारी और वो थोड़ी बड़ी भी है, इससे ये साइज में भी जरा छोटी है उससे। हाँ। अच्छा, लेकिन हालांकि मैं एक चीज ये कहूंगा कि ये जो प्रेजेंटर थे वीडियो के, वो 6'1" थे। वो जब इसके ऊपर बैठे, मे बी थोड़ा सा क्रैम्प्ड उनके लिए हो, लेकिन ही वाज मैनेजिंग इट वेरी वेल। और इसी तरह वो 5'6" के थे दूसरे जो उस पे बैठे थे। और वो ऑलमोस्ट 5'7" उन्होंने बताया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो कि अपने toes पे थे। 5'10" की जो 5'10", height वाले 5'11" लोगों एक के लिए एवरेज हाइट जो perfect होती है उसके हाँ। हिसाब से एक नॉर्मल बेहतरीन हाइट है। के लिए बेहतरीन है। बाकी ऑल इन ऑल अगर इस बाइक को हम समराइज करें तो हमने इसकी इंजन की क्वालिटीज वगैरह और सब कुछ देखा, और उन्होंने उसके बारे में बताया कि वो दैट इज वे अप टू द मार्क, बिल्कुल जैसे अपने इनके कंपेटिटर्स हैं उसके एन मुताबिक है। लेकिन यार मुझे जो सबसे ज्यादा एक फीचर पसंद आया इसके अंदर, जो कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे नहीं देखता, ठीक है, वो बेसिकली यार ये है अपना ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी और वो बड़ा यूएसबी। बहुत आसानी हो जाती है। एक तो फोन चार्जिंग में बड़ी सपोर्ट हो जाती है, दूसरा आपको कॉल्स अटेंड करने के लिए जेब के अंदर हाथ डालने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही है आपका हमारे phone यहाँ पे connected है। मतलब राइडर्स वगैरह आते हैं ना, जब हम कुछ मतलब कुछ सामान अगर हम मंगवा रहे हैं कहीं से, तो वो बेचारे बाज दफा बैटरी बैंक के साथ होते हैं बैटरी ना। बैंक एक मोबाइल अलहदा पकड़ा होता है, बैटरी बैंक उन्होंने अलहदा पकड़ा होता है, और वो बेचारे बाज दफा बैटरी बैंक भी खत्म हो जाता है, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हम 15 मिनट आपके घर के बाहर ही खड़े हैं, आप जरा इसको चार्जिंग पे लगा दें।
सो ये एक हैंडी फीचर एक ये बाइक के बहुत अंदर होना ये बड़ा वाकई में बहुत अच्छा है। वाकई बहुत कंफर्टेबल है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी सस्पेंशन की उन्होंने बात की और मुझे तो बहुत पसंद आई, खास तौर पे इसके हाँ, जो शॉक्स का वो था ना कि बिल्कुल स्पोर्टियर है। स्पोर्टियर है। दूसरा ये कि अमूमन मतलब इंडिया है, पाकिस्तान है, यहाँ पे हर तरह के रूट पे बाइक को चलाया जाता है, जैसे तो ये अगर आप ऑफ रोड भी हैं तो ये बाइक तंग नहीं करेगी, बड़ा अच्छा कंफर्टेबल उसकी ड्राइव नजर आई मुझे। सो अगर तुम वीडियो को समराइज करो, क्योंकि ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम बाइक चलाते भी हो, तुम बताओ। मैं अगर समराइज करूंगा ना तो मैं कभी इस पे बात करना खत्म ही नहीं करूंगा, मुझे इतनी पसंद आई है ये बाइक, आई रियली लव्ड इट। क्रश, बिल्कुल, इस एज के बच्चों का क्रश है ये चले बाइक। जी, हाँ। ही रियली लव्ड इट। और फिर इस चीज को यहीं पे रखते हैं। और इस चीज के साथ के बजाज अगर 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के अंदर एक किंग माना जाता है तो दैट इज फॉर अ रीजन। और वो रीजन हमारे सामने अभी भी इस थंबनेल की सूरत में मौजूद है। और वो सही कहते हैं, हमारा बजाज। हमारा हाँ। बजाज। और बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन बजाज के साथ चेतक से है। और अब तो चेतक भी ईवी मॉडल आता है ना उसका, अरे और उसके अंदर टेक पैक है, उसमें ये सारे फीचर्स उसमें भी आ जाते हैं। तो चलो एक काम करो कि फिर कभी वो वाली वीडियो भी हमें दिखाओ और हम उसके ऊपर भी देखेंगे और अपना रिएक्शन अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। बाकी इस वीडियो को बताइएगा यार आपको कैसी लगी, और अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।